गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज दूसरा दिन है गल्फलैंडर में और हम कोशिश करेंगे कि आज करीब 400 माइल तो करेंगे ही। 400 माइल आप 1.6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उतने किलोमीटर्स होंगे। कल रात को बड़ी अच्छी नींद आई। क्या ना, इतना गाड़ी चला के मैं तो ट्रक ड्राइवर ही हो गया। ये तो है तो ट्रक ही, और मैं ट्रक ड्राइवरों के साथ ही सोता हूँ, उनके रेस्ट स्टॉप्स में उनके साथ खाना खाता हूँ, जैसे मैंने इंडिया में किया। जब गल्फलैंडर इंडिया में थी ना, तो वही मैं उनके साथ भी करता था। बातें होती है, अच्छा लगता है। वो हमारे बारे में भी पूछते हैं तो हम बस बताने को तैयार हो जाते हैं। तो ये है आज की जिंदगी शुरू। कितना दूर पहुंचेंगे, बस 12-13 घंटे के बाद हम देखेंगे कि कितनी दूरी तय हो चुकी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते रहेंगे कि हो क्या रहा है हमारी इस एडवेंचर में। और गल्फलैंडर की भी कहानियां मैं सुनाते जाऊंगा। अब अंदर तो काफ़ी कबाड़ा हुआ है इस घर में। ये मेरा घर 2 महीने का घर है, तो इस कबाड़े को मुझे थोड़ा थोड़ा करके सुलझाना है। अब आपसे बातें करते करते मैं पेंसिल्वेनिया स्टेट छोड़ चुका हूँ और ओहायो स्टेट के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। उम्मीद है कि डीजल की जो भाव है ना, यहाँ पे कम है। पेंसिल्वेनिया में काफ़ी था। और हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमेरिका इंडिया से ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा फ्यूल को लेकर। गुड आफ्टरनून। 300 miles this morning complete, and I'm hoping to get another 200 in miles, not kilometers. And we're somewhere in near Sandusky, Ohio, or maybe even north of it. I think I left it a little behind, so just taking a little rest, walking around, shaking it off, and we'll get on the road again in about 5 minutes. Gulflander, so far so good. We're behaving like good buddies and partners. Let's hope this continues. अब थोड़ा सा अपडेट है कि just before I shot this previous scene, I'm trying to start Gulflander and वो start नहीं हो रहा है. It's wait and watch. Maybe if I give it some rest, it'll start up. And this is a pattern it's been displaying for a while, that during the day when it gets hot, it struggles to start, and magically after a while it just starts on its own. So I'm hoping that pattern continues. Maybe it's the heat for some reason. I mean, early morning it's a quick, beautiful start, no problem. So let's see what happens. This Chicago skyline looks way more imposing in this distance than the one in New York. The setting sun is doing full justice, bringing out all the hues and the colors and the shades. Of course, I got to focus on this traffic up ahead. I'm looking to take exit 51H, which is straight down the lane I'm in, to 290 West. 17 hours of driving. We finally found a place in Wisconsin. We started in Pennsylvania, and well, I'm still to figure out how much I drove today, but here we are in Wisconsin in Lake Geneva, and I couldn't wait till we got to the highway, saw the Walmart, said okay, let's do this.
So I'm here till they kick me out. I hope they don't. I'm going to be sleeping inside. I'm going to try and find something to eat, and I want to pick up a few things like wipes so I can have a dry bath. There's no water in this truck yet. There's a water problem, so we've got to rely on a dry bath or someone inviting us home, or me home. There's no us.